मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सब आज आप बात नहीं करना, पहले एक बात कर लेते हैं, फिर दूसरी बात करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ Food. Fatima Bari. हाथ पर ले बोलते ना अपन Small fry. Little it is case so that you can be able to perform very well. माइक ऑन कर। यहाँ से माइक। अनमोल माइक उधर है। Who will explain what you did? धर्मो no one अपने हृदय के किवाड़ खोलो. What does it? Open the gate of your heart. Okay. Then धर्मो पक्ष की दीवार तोड़ो. Oh. We have to love all. Okay. Now परमात्मा से नाता जोड़ो. Connect to the. We have to connect ourselves to the God. चलो अच्छा है। And Dada Bhagwan, you are praying for your own soul, Dada Bhagwan. And you know that singing, chanting Dada Bhagwan Asim Jai Jai Karo. We will chant together, okay? When everybody will be chanting, you people also will What be we were chanting when we are coming up? up. Dada Bhagwan Asim Jai Jai Karo. Dada Bhagwan Asim Jai Jai Karo. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
Jai Sachidana. Jai Sachidana. एक मिनट, एक मिनट। So simple thing for you. I'm telling you one simple thing for you. Every day at night you sleep. And every day in the morning you wake up. So when you wake up, what you do? Prayer. Perfect. So in the morning when we wake up, we are doing prayer. So in whatever prayer you are doing, just I am giving you one more sentence, prayer of one more sentence to include in your prayers. Correct? The God you believe, you have to ask the strength. Okay, oh God, I'm speaking, you repeat. Oh God, give me the strength Give me the strength so that so that I do not hurt I do not hurt any living being in this world any living being in this world by my thoughts, by my thoughts, by my speech, by my speech, or by my action. or by my action. Simple. Simple. You can remember it. If you forget, ask Mama. Okay? Ask Bhavna. Can you repeat? Can you repeat? What I say? God, Oh God, give me the strength so that I do not hurt any living being in this world by my thoughts, by my speech, or by my action. can you Simple. Now repeat. Oh God, give me the strength. Oh God, give me the strength not to hurt any living thing. very Any living being. Correct? Perfect. So this simple thing. What this prayer will give you result, you know? It will give you amazing results. You want to be happy in your life? yes. Are you sure? Yes. Everybody? Yes. You also? Yes. Kate, blessing, come front. Come. They are participating from there, no problem. Yes. Yes. So, you all of us, we want to live happy, blissful life. Perfect? When you do this prayer in the morning, what will happen? God will understand. What is your name? Jigita. So God will understand that Jigita's intention is not to hurt any living being in this world. So in return, God will give you such circumstances that nobody will hurt you. And when nobody will hurt you, what will remain with you? Happiness. So there is a simple master key to be happy in this world. Okay? So again, next time when you will meet, I will ask. You remember it very well? I will ask everybody. You also. Yes. You can remember. Now you are not small kids. You are not big. You are not drinking milk with bottle. You are drinking milk in mug. So you are big. So you can remember it. Okay. You want to ask me any question? No problem. Don't worry. This is enough. This is enough. He wanted to ask. Yeah. Why are some people good and why are Speak loudly. some people good and why are some bad? To repeat again. Why are some people good and why are some bad? Why are
some people good and why some people are bad? Oh, yeah, very good question. You see, इसको ही दे दे. if I Hold it. Hold it. have to go, say, from here to Ilupeju, and if I know how to go Ilupeju, then I will go towards Ilupeju. But if I have wrong understanding that Ilupeju is not on the left hand but it is on the right hand, then what I will do? So I will not go in the left, I will go in the right, thinking that I will reach Ilupeju. So good people and bad people, their understanding is not clear. If their understanding is correct, then they will do good thing. And their understanding for that thing is different. So they think whatever bad they are doing with their thinking that no, I am doing good. So just change your understanding. Means if you correct your understanding, then you will be a good person. Say you know that if I hurt somebody, it's a bad thing, then you will not hurt anybody. And by chance, you hurt somebody, then also immediately you will be awake. That, oh, I hurt somebody. Then you will ask for forgiveness. You know that I should not speak lie. If that understanding is clear, then by chance you will speak lie. Immediately that awareness will be there. And you will ask for forgiveness. And when you ask for forgiveness, your understanding will become more and more clear. So, you can't blame any people, bad people or good people. But we have to change their inner vision. We have to correct their understanding. You understand? But what we do, we never try to correct their understanding. We just say, no, you can't do like that. But inner understanding, if you change that understanding, then you will be good for the whole life. So just change your understanding, okay? Good person. Ask Go. anything. Anything else? Anything else you want to ask? So you want to be a good person? Then you can earn money then. It will be a big problem. You will not have plenty of money. Good person are not having plenty of money. Why? First class question. Why we can't be good and have money also? Isn't it? That's what you want to say. Yeah. You say it is our common observation. Because we observe outside, we say that there are so many people, they are not straightforward. And they are doing wrong thing and they are earning money. So in us also, in our mind also, belief is created. Okay, if you want to have plenty of money, you have to do this thing, you have to do that thing. Correct? But really speaking, you want to be happy. Your ultimate goal is not money. Your goal is to be happy in this life. Your goal is to live happy life. And what is the meaning of happy life? Happy end. Hmm? Happy end. Sweet. Happy ending.
Happy ending, yes, happy ending. Happy life means even if somebody shout you, you can remain happy with it. If somebody slaps you, say you are playing together and somebody beat you, then also you can remain happy with it. If somebody insult you, then also you can remain happy. If you get good food, then also you can remain happy. And if you don't get food of your choice, your taste, then also you can remain happy. That is the real happiness. So we have to achieve that type of happiness. But what you are thinking? If I have a good dress, then I will be happy. If I have good food, then I will be happy. If I have a big car, then I will be happy. If I have a big house, then I will be happy. But really speaking, happiness, the people seeking happiness, it is a state of mind. So if your mind is happy in all type of situation, then you are happy. But if plenty money is there are so many people, they have plenty money, but they are not happy. If you meet them, they will say, oh, I have big problem, I have a heart problem, I have diabetes problem, I have family problem. So they have plenty money, but still they are not happy. So you decide that I want to be happy in this life, in all type of situation. Favorable situation, unfavorable situation, in circumstances of happiness, unhappiness, in all type of situation, I want to remain happy. Understand? So plenty money will not make you happy. If everybody will give you respect, then you will get happiness. It's not like that. But if your understanding is clear, then you can remain happy in all type of situations. And that's why I gave you that prayer. In the morning, whenever you wake up, just ask for the strength from the God. Give me the strength so that I do not hurt any living being in this world. Not only human being. You understand? Any living being in this world by my thoughts, by my speech, or by my action. You hurt somebody by action? Oh, you're a good boy. Not hurting anybody. He comes बच्चा first. बच्चा रहेगा तो क्या करो? He comes first in आप class. पूछिए बच्चा रहेगा First in In class. class. But if mosquito will sit on your hand, what you will do? Because that advertise is there. Mosquito kills you, kill mosquito. So your belief has changed. But now you have to aware. Actually, Bharat bhai, it should be reversed. Because you kill mosquito, mosquitoes kill you. Killing. Exactly. Perfect. But that advertise was there. Now it is No, it is still there. Still it is there. It is there only in the diary. So now when mosquito is there, what you can do like this? Don't kill it. Okay. Because you want to be happy. So So I get if you kill somebody, he will be happy. Means I have killed so many times. I have never done. If you kill somebody, he will be happy. No. No. Same way, now when you pray this, then you will be awakened. So immediately you will be able to see, oh no, I am hurting somebody. So I don't want to hurt. So nature will understand, God will understand. Oh, his intention is not to hurt anybody. So nature will give you such circumstances that nobody will hurt you. And when nobody will hurt you, you will be the most happy person in the world. Even if you are not having all these luxuries,
and still you'll be more happy. So your goal is to be happy. Your goal is not money or luxury or this or that. Good question. You want to ask anything? Oh, ask. Yes, Kate was the Why you do good for some people and some people turn it bad? Yeah, very good question. Another good question. Very good. You do good to people, but they do that They, to they, you. they hurt you. You also have that Yes, same experience. thing, Yeah, same same experience. Ask also, you Yeah. We are also have. getting this experience And every what day. we do? Correct. You see? You are doing good now. Say, here they are not, you are making yogurt at home. Yes. You know how to make yogurt? Yes, sir. How you make it? I put water for fire. I put milk and honey. And then leave it in the night, and in the morning the yogurt will be ready. Correct? Here also, you are good at other people and they are hurting you. So when you are good at other people, means you have put that you have started making yogurt, but it will be ready after 7-8 hours. So you are good with everybody. The result will come after some time gap. Immediately the result will not come. So during that time gap, you will have to keep patience. You understand? You say, there are many people, they are doing bad with other people, they are hurting other people, and still other people will be good with them. And reverse is also there. So if you want that everybody is good with you, nobody is hurting you, then from today you stop hurting anybody. From today you start being good with everybody. And as a result, the Mother Nature will give you such circumstances that nobody will hurt you. Everybody will make you happy. But you have to keep patience for some time. Because इसको हम अपने तरीके से समझें. हाँ. ये बात सही है, आप जो बता रहे हैं ना. I'm just asking you, we are doing nothing, we are not doing anything wrong with anyone. We know that, after listening so many satsang, we know that doing wrong is not correct. We are not doing anything wrong with anyone. Still we are getting wrong, like whatever we are getting, it's okay. We know inside from our heart, whatever is going to happen is going to be correct. For during that particular time period, we have to keep the patience, that also I know. How we keep that patience? But there is a science of cause and effect. Cause and effect. Bring this. No, that is what. हाथ लगा रिकॉर्डिंग करेगा क्या? For you I am telling, there is a one natural science, scientific principle of the Mother Nature. Principle of cause and effect. First the cause will be there and then the effect will be there. Correct? And you can understand whatever causes you created, they are all of the past birth. And the effect you are enjoying or suffering in this birth. Now cause you can't see. So what you will think, oh, I am nice with everybody and still why people are not nice with me? The science of cause and effect.
So now, if you don't like this effect, you change your cause. So new effect will be good. So we know that whatever is going to happen is good. We after listening. No, not whatever going to happen is good. Whatever going to happen is just. Correct. She has used the word correct actually. Huh? She used the word correct when she was asking the question. First they have correct. So whatever happen is just, is correct. Not for your good, is correct. Correct means you are getting the effect of past cause. Correct? Now, at present, you don't like the effect. If somebody will insult you, you don't like it. And if somebody will give you respect, then you will like it. Say, there are some of your friends, if you visit them and they treat you very nicely, then you will go to their place often. And some of your friends who are not treating you well, then you will not visit him. You understand? Simple thing. So, in this world, there is science of cause and effect. But cause you have created in the previous birth. And now the effect of that cause is you are suffering or enjoying in this birth. And if you don't like this effect, then now you change the cause. Say somebody insulting you. Why the person is insulting you? Because in past you created that type of causes. So now, if you will not insult anybody, your intention is not to insult anybody, then in return nobody will insult you. So just change the cause. The effect will change automatically. What we are trying to do, we are trying to change the effect. You will try to get, you will look for the where I will get respect, where I will get good treatment. But you are not trying to change the cause. So that you are trying to change the effect. Effect nobody can change. You can change cause, you can't change effect. But right now, in our senses, we are not doing anything wrong with anyone. Like we are creating new Correct. cause and good cause right now. Yeah. So it will come afterward. It will come after. I'm asking about that particular time period. How you will keep patience? No, but if you understand that this is the effect of my past cause. Say you have taken loan from the bank, and your business is going on very well, and you are repaying the loan. So money from your pocket is going, and still you will be happy. Oh, this thing is clear. Loan is clear. I have to keep patience. No, So you no. have this understanding. At that time, you will be happy. Oh, my loan is cleared now. Okay. So even if you are paid, the money is going from your pocket, but you know that I had taken loan from the bank and I am repaying, so my loan is clear. So you be after paying money you are all happy. Same way here, when somebody is insulting you, you are paying back the loan. Children, are you understanding? You can ask questions if you don't understand. So when you are paying back the loan, you must be happy. You are relieved of the loan. Your debt is clear. Same way here the past debt is clear. Being clear. So you must be happy. Not patience, happy. 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 She wanted to do something. Sir, why is it that you do good to someone, but when you need help, like you help someone, you used to help people, but when you need help, They don't come forward. it's very hard for you to
to get someone that will help you to. Hmm. Why is it so? You see, for you, just keep in your mind that I want to help everybody. Correct? Simple thing. I want to help everybody. What God is doing, God is helping everybody. God never expect that you will help God. Simple thing. Same way, when you pray God, you worship God, you must keep in your mind that I have to help everybody. I don't need help from anybody. But if anybody help you, then accept that thing. But if nobody helps you at that time, just keep in your mind that how is God helping everybody but not taking anybody's help. And then God will be happy. If you change your understanding like this, God will be very happy. Because God is God. God don't want anything from you. You see, it's a good thing that when we go to a prayer place, we put some money. Church mein hoy na? In church, in mosque, we offer something. But do you think God need it? He's the one. God need money? Just tell me in black and white, God need money? No. No. But why we are still putting the money when God did not need it? Why still we putting money? God Oh, no. If God doesn't need it, why are we putting putting money? it in No. His name. It is the business for those people. So they No. want money. They See, want money. they made, it's a long time they made it one custom that when you go to God, put something. Actually, the reason behind that was different. But now that religious understanding is not there. So, as per him, what he says is very correct. And nowadays, actually in business, ethics must be there. Means religion must be there. But in religion, there should not be any business. But nowadays the influence of time is such that in business there is no ethics. And in religion, business has entered. Simple, don't tell anybody, just to understand you. Don't teach outside that, oh, now in religion, business has entered. Just for your understanding. So, before, when we go to church or mosque or place of worship, we offer something, we put something in donation box. It is symbolic that I am surrendering my egoism, my greed, my lust in your lotus feet. And when you surrender all that thing, you will become pure. You understand? When we are entering, why we remove our shoes outside? You don't want to bring dirty to house. Huh? No. It's a common thing, but you see, when we enter the place of worship, we remove our shoes outside. It's a symbolic. We are putting our ego there. And without ego, we are going to worship God. And when you worship God without ego, God will accept your prayer. But when I worship God with ego,
God will not accept. So it's a symbolic. So it's a symbolic, but when you remove your shoes, it will remain in your mind. Oh, now I have to put my ego here. When I'm going inside to worship God, I have to put my ego here. So when you put your ego aside for some time, you will feel happy. So God will be happy. When God will be happy? When you will put your ego one side. But if you put money, God will not be happy. God don't need money. You get happiness from money. God is not getting happiness from money. God is having God's nature. It's God's inherent nature is permanent bliss, happiness. And we are seeking happiness from outside material. Simple, from outside material. Wherever your belief of happiness is there, you will feel happy. If you get this dress and you like it, then you will be happy. But same dress, if you will give to Jyoti, she will not like it. So she will not be happy. Simple thing. So in this world, no material can make you happy. But your correct understanding, your correct belief, your belief makes you happy or unhappy. You got it? You got the point? Need to change belief. So simply, you have to change your belief. Sunam. What is your name? Rosemary. Rosemary. Rosemary, you understood? You have to just change your belief and you will be happy. We try to change the circumstances, and which is not possible, and we are becoming more unhappy. But just change your belief and you will be happy. So simple. Just I am giving you one example. Say you have headache. So when headache is there, what you will think? When headache is there, what you will think? Oh, I have headache, I can't work. I will have to take paracetamol. Panadol. But at that time, just change your belief. Just talk with yourself, your mind. Okay, Rosemary, only you have headache. Your throat is okay, your hands are okay, your legs are okay, your tummy is okay, your lungs okay, your heart okay. You have only one problem, headache. Why you are worried? Like that, you talk with your own mind and you will feel happy. Otherwise, if you say, oh, I have headache, that pain will multiply. The pain will multiply. And if you talk like this, okay, oh, you only headache, all other things are okay. Okay, don't worry, just take Panadol and go ahead. Then you will feel happy within. Even headache will be there. Headache is there, still you will be happy. आपको समझ में आया? Just change your belief and you will be happy. We try to change the circumstances, and which is not in our control. So what we are doing, we are trying to change the circumstances which are not in our control. So our energy, we are wasting our time and energy. And still we don't get any result. But just change your belief and you will be happy. He has one question. One right. हाँ. Mind, inner mind and outer mind. He's asking what is mind.
I think that will answer your question. Inner mind and outer Inner mind. mind and Oh, inner mind and outer mind. Yeah. What is inner mind and outer mind? Mind is another one. Mind, actually, we say conscious mind and subconscious mind, Yes. like that. The simple thing. If you want to understand mind, in simple language, mind is nothing but bundle of thoughts. Simple thing, bundle of thoughts. And from that bundle, one by one, thoughts are sprouting, coming out. Very simple thing. Now from this bundle, which thought will come out, that is not decided. Say, at present you are sitting there. In this situation, in these circumstances, in your mind, the thought of eating something will not sprout. But say it's 8:30, I said everything will finish, then what will happen? That thought of eating something will sprout in your mind. So these thoughts are sprouting as per the place, kshetra, place, timing, kal. Dravya, kshetra, kal, bhav. So as per that thoughts are sprouting. So in that you can't do anything. Your control is not there. People say we have to control mind, we have to control mind, but it's not possible. And actually, their understanding, how they understand that to control mind means whatever thoughts I want to think, that thought will come, other thoughts will not come. No, it's not like that. Control of mind in Lord Krishna's language, if you remain observer of your mind, that means you have controlled your mind. You are observer. But when we sit with our mind, then you will get tired. You have to run. Then you will get tired. But when you are observer, you are just standing and observing that, oh, this thought has come, now this thought has come, now this thought has come. When you are observer, you will not get tired, but you will feel happiness. Now another thing, how this mind is created, if you understand that thing, then you can correct your mind. How this mind is created, who is the father and mother of mind? Simple, basic question. You know? Oh, I think you know. You know who is the father and mother of mind? Oh, you are also not knowing. You are coming to this session so long time. Bhavana must be knowing. You can see in mobile and tell me, no problem. You can helpline is open. I'm sending the reminder to them. You say, who is the father and mother of mind? Opinion is the father of mind. And when any opinion you express in the language, in gross language or in inner language, it's mother. So when opinion is the father of mind and language is the mother. So during our lifespan, during the whole day, how many opinions we are giving? And nobody is asking. Free advice. Anybody is asking? Free advice. Free advice.
Even the person is not ready to listen, then also we say, oh, you said, you listen me. So, simple thing. Opinion is the father of mind and language is the mother. So, during the whole day, we are giving so many opinions. Now, if you realize, oh, I gave this wrong opinion, bad opinion, that time, be alert and change your opinion. Then you will get better, smooth mind. At present, your mind is little bit coarse. So even if you શું કહેવાય રંધો મારો રંધો મારે ને શું કહેવાય कारपेंटर का हाँ। वो जो Planning, No, रंधा मारने को कहते हैं planning the wood, planning. प्लेनर, Planning the wood. प्लेनिंग द वुड. हाँ तो ये मन जब ऐसा नोट वाला होता है ना गांठ वाला इट इज डिफिकल्ट To plan it. to make it plan smooth. it. But when you change your opinion, your mind will be without any notes. So it will be very easy for you. But opinion is also coming from mind only. Hmm? Our mind is only creating the opinion. Yes. Oh. We have experience that okay, I did something. I Yeah. understood. We change our thought process. Thoughts are there. Then our opinion will be also changed. But our thoughts are coming from our experience. So we have to change that. Na? Our whatever is not cause. He told before ना कि हमें पहले से वो change करना है. No, बराबर है, perfect है. You say simple thing. At present, so whatever your mind is there, that mind is created in past birth by the opinion you gave. So now, at present you don't like your mind. Then what to do? You change your opinion, you correct your opinion. So this is a scientific process. But if you say, no, I don't like this thought, I don't like this thought, I want to stop that thing, it's not possible. So, as per Lord Krishna, then what to do? When thoughts are coming, just observe it. So you are sitting here and the thought will come, when they will change the topic. So you have to say, okay, noted, now next. So you are not clinging that thought. So you will go ahead. You will not stuck there. And when you will not stuck there, you will feel happy. Thoughts will not affect. Thoughts will not affect. Thoughts will not affect you. Thoughts को लटक के सलाम कर देगा. Because See, sometimes because if you, Somebody- what people are thinking, if there will be no thoughts, then I will be very happy. It's not possible. But if you don't have any type of thoughts, then you are absent-minded person. If you don't have any type of thoughts, then you are absent-minded. sometimes So somebody will there's- say, and that thought will keep rolling in the mind for the whole night. Will keep coming back. Correct, correct. You see, that's why I'm telling you that because you are not observer, you don't observe your thoughts, you sit with your thought, the same thought will repeat. You feel the same thought is repeating. Like that fly will sit on the street. वापस आ जाएगी. आप उनको ऐसा करेंगे, जाएगी, फिर वापिस आ जाएगी. ऐसा आपका मन भी एक थॉट के आसपास ही घूमता रहता है. Die your mind and become diamond. क्या बोला? Die your mind, become diamond. हाँ, हाँ. Die or might become die. No, just observe your mind and it will not affect you. When you observe your mind, it will not affect you. And when you sit with your mind, you will get tired.
we have to create our limitations or the boundaries. This much we have to fully observe. No. Whole mind you have to observe. But at present, whatever is possible, observe it. Can you give example how it's हाँ, not able to last relate time आपने एक when एग्जांपल दिया था कि हम खिड़की में बैठे होते हैं और सामने गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं ऐसे हमारे थॉट्स जब आ रहे हैं और जा रहे हैं हाँ, बस हाँ। उन्हें हमें देखना है हाँ। हमने Observe रोक के करना है। हाँ। कुछ नहीं कहते ना हाँ। ऐसे लेना है भावना अच्छा है देखा है Yeah. मुझे आपका मार्क्स बढ़ाने पड़ेगे याद है No, because we don't have to tell them ना कि stop, कि go, रुक जाओ या मत मत चलो जाओ. Yes. थॉट्स भी ऐसे ही हैं हमको अच्छा याद रह गया अच्छा Yeah. यू अंडरस्टैंड Yeah. तो क्या बोले हम विंडो में बैठे हैं और बाहर ट्रैफिक है हम सब देखते ही रहते हैं एक गाड़ी है दूसरी है ये आई वी आर जस्ट ऑब्जर्वर एंड वी फील हैप्पी वो आधा घंटा भी कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा सेम वे व्हाट एवर थॉट्स आर कमिंग जस्ट ऑब्जर्व इट एंड यू विल बी हैप्पी But we have to take decision on the basis of that thought process. ना. ओह This is the true of the life. correct so when you have to take decision you see the circumstances will force you to take decision but you feel that you are taking decision so under the pressure of circumstances you are taking decision sometimes you don't want to take that type of decision but the pressure of the other people will be there you have to take the decision that we can see oh this pressure is there but the pressure of the circumstances you can't see समझ रहे हैं तो हम क्या करते हैं जब कोई व्यक्ति हमें प्रेशर करती है तो हमको ब्लेम करते हैं उसने मुझे फोर्स किया इसलिए मुझे करना पड़ा बट इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बट व्हेन यू लाइक इट यू विल फील गो आई डिड इट एंड व्हेन यू डोंट लाइक इट यू से ओ आई हैव टू डू इट बट without any exception from birth to death all the circumstances all the situations you are facing is not in your control it is governed by scientific circumstantial evidences but people don't know about these things scientific circumstantial evidences so they think oh there is one power there is supreme power there is god is doing all these things so at one stage it's okay like in school there are different standard 1 to 12 standard in all the standard they will not teach the same thing same way in lower standard one has to say that god is doing all these things but when you reach higher standard then the world is governed by scientific circumstantial evidences and god is there but god's state of being is very high than that state of doer but when we say god is doer we are degrading god but for general people it's okay because the belief that God is doer and God will do everything and I am praying God so God will from this situation God will take me out God will help me that thing one support will be there that way it is okay otherwise if you want to know reality in this world nobody is doer and if anybody is doer he is responsible for that thing if one kills some other person he is responsible if one helps some other person responsible means credit and that debit same way if God is doing all these things, for all the things, God is responsible.
then what will happen? Say if somebody, So Ukraine war, what is responsible? What do you say, young Lord? Huh? That's, We are responsible. somewhere God is responsible and somewhere God is not responsible. So we have to decide one side. That is why he gave you the word So- scientific circumference. so God is there in the very presence. Is there, that level, Huh, your level exactly, is there. exactly. And in the very presence of the God, everything is going on. Without His presence, nothing will happen. But God is not involved in anything. Like in chemistry, chemical wale, become chemical. वो लगता है BSc लगे chemistry सर, become chem. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन करना है तो उस पर यू नीड कैटालिस्ट. So if catalyst is there, then and only then that reaction will take place. But in that reaction, catalyst not actively involved in anything. Still, only thing, its presence is there. Same way, in the very presence of God, everything is going on. But God is not at all involved in anything, in good thing or bad thing. Same way, God is within you also. And in the presence of that God, in the very presence of that God, you are doing all the activity. You are listening satsang, you are doing some work. Everything, you talk, you walk, everything in the presence of God. If that God is not there, what you will say? Dead body. Dead body can't do anything. And God is also not doer. Only His presence is there. God is there and God is God. And God's state is so higher. Really speaking, the state of doer and the state of non-doer. Ours is a state of doership. We do good and bad things. We have believed that I did that and I did that. So good and bad, we become doer of that thing. Actually, we are not doer. But because of ignorance, we claim that I am doer or other person is doer. But simple thing, in the very presence of God, everything is going on. And people don't understand who is doing all these things. So they say God is doer. And when they say God is doer, they feel happy also. Something wrong will happen. You say, oh, what we can do is in God's hands. भजन ना मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. हाँ We are just an instrument. हाँ ना वो तो बराबर है. That's the good thing. वो क्या है, एक प्रकार का विनय है. कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा से हो रहा है. But keep that thing when somebody insult you at that time also keep that thing. कि भगवान की कृपा से इंसल्ट हुआ, उसने मेरा इंसल्ट नहीं किया है. Clearing our Clearing our No. minds. That to remember only the problem. So if you say God is doer, for everything keep that God is doer. Something bad is happen, God is doer. Something right happen, God. Then you will progress. But when something good happens, I say, oh, I did it. Because I was there, this can happen. When something bad, what I can do? Nothing in my hands, everything is ऊपर वाले के हाथ में. वहाँ फिर हाथ ऊपर करे, ऊपर वाले के हाथ में. उसको blame करते हैं. आप लोग कोई पूछता हो, कुछ पूछता है? Please you can ask questions. हाँ. हिंदी में ये अपने जीवन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं. प्रवचन तो नहीं है. हाँ, क्वेश्चन आंसर है जा, पूछना, पूछने की जगह है. आप पूछो. जैसे आप आए हो. अरे आप लोग नाइजीरिया क्यों आ गए? पैसा कमाने. पैसा कमाना, परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर है. पैसा कमाने के लिए आए हैं, बराबर. एकदम सही आंसर है, पैसा कमाने के लिए आए. पर पैसा क्यों कमाना है?
पैसा जो समाज में नीड है उसको पूर्ति करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, नीट के लिए तो आपको इंडिया में भी इतना मिल जाएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वो सफिशिएंट नहीं था। सेविंग नहीं होता। नहीं, इतना नहीं मिलता है इंडिया में। सफिशिएंट नहीं था। सफिशिएंट नहीं था। नहीं, इतना नहीं मिलता, थोड़ा यहाँ ज्यादा होता है तभी तो इधर आता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि आपको ऐसा है कि मेरे हाथ में पैसा आएगा, देन आई विल बी हैप्पी। जैसे हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हाँ वही। इच्छाएं पूर्ति नहीं तो क्या हम अनहैप्पी है? हाँ नहीं, वही बता, आपको पैसा आएगा तो आपकी जो भी इच्छा है, मकान लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ ये करना है, वो करना है, तो आई कैन डू एवरीथिंग इफ आई हैव मनी। मेरे पास पैसा मैं सब कर पाऊंगा, ऐसा हो जाता है ना। तो अल्टीमेटली आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको हैप्पीनेस की जरूरत है, खुशी की जरूरत। खुशी की जरूरत है। आपको क्या है कि रिक्वायरमेंट है कि आपको अच्छा मकान बनाना है, तो मकान बन गया तो आपको खुशी होगी ना। तो आपको पैसा चाहिए, खुशी चाहिए। बट जो खुशी है वो किसके थ्रू आया? पैसे के थ्रू आया। इन्वॉल्वमेंट है पैसा उसमें। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पैसे से खुशी नहीं आती। पैसे से खुशी आती है, जो सारे पैसे वाले हैप्पी नहीं होते। सब पैसे वाले हैप्पी होंगे, पर इज इट ट्रू? ऐसा है? सबसे ज्यादा दुखी वो है। देखो मैं आपको एक बता दूं, सिंपल बता दूं। पैसे का स्वभाव क्या है, लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है, समझना है। हम बोलते हैं लक्ष्मी जी चंचल है, लक्ष्मी जी चंचल है, सब बोलते हैं। तो हम हाथ में चली रहा लक्ष्मी जी चंचल है, मगर जो सही बात समझना है तो लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है ऐसा नहीं। लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है कि आपके पास लक्ष्मी जी नहीं है तो कमाने की चिंता, और लक्ष्मी जी कमाया तो संभालने की चिंता, और कोई चीटिंग करके लेके गया तो भी चिंता करवाएगा। तो लक्ष्मी का स्वभाव ही चिंता करवाने का है। फिर भी लोग लक्ष्मी जी के पीछे भागते कि नहीं भागते? और कितनी गलत बात है। लक्ष्मी जी नारायण की धर्मपत्नी, उनके पीछे भागेंगे तो नारायण नाराज हो जाएंगे, और नारायण नाराज हो गए तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? बात को समझना तो पड़ेगा। कल एक वाक्य मैंने पढ़ा था, डोंट रन आफ्टर मनी, लेट मनी रन आफ्टर यू। अब इसको आप जरा समझा दीजिए। क्या बराबर है? ख्याल में? तो आप यहाँ नाइजीरिया आए हैं, तो ऐसा है कि यहाँ आएंगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलेगा, पैसा सेविंग होगा, तो इंडिया में जाके फिर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सब प्लानिंग तो चलता है। वो प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग के हिसाब से होता नहीं है, पर हो गया तो अच्छी बात है। कुछ होता नहीं है। क्या सब होता नहीं है, कुछ होता है। कुछ होता है। हाँ वो तो कुछ तो होगा ना, सब नहीं होगा तो फिर कोई आएगा ही नहीं। कुछ होगा ना तो आशा में आते रहेंगे। एक रहता है ना कि आशा रहती है, घर अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। तो मेरा कहने का सिंपल था कि आप नाइजीरिया आए हैं पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, मगर आपकी बिलीफ में है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो मुझे सब सुख मिलेगा। तो सही में आप सुख के लिए आए हैं। सुख तो कभी मिलेगा नहीं। कहीं मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। क्या बात? क्योंकि इच्छा क्या होता है कि इच्छाएं कभी मिटती नहीं, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी। हाँ इच्छाएं बढ़ेगी तो सुख फिर कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। आपको और वर्क करना पड़ेगा। हाँ वैसे करते करते एंड आ जाएगा नहीं? तो फिर एंड हो ही जाता है ना। लोग सोचते हैं कि अच्छा बचपन में है तो चलो बड़े हो जाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर कमाएंगे तो फिर हम खुशी हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं कि अच्छा बड़े हो गए तो थोड़ा पैसे कमा ले, इसके बाद खुशी हो जाएंगे। फिर पैसे कमाते कमाते कैसे टाइम आ जाता है कि फिर बूढ़े हो जाते हैं। नहीं पैसे आते फिर अभी शादी कर लेते हैं, पैसे आए कमाए फिर भी अभी हैप्पी नहीं है, तो देखते हैं सबको, अरे सबने शादी किया कितने हैप्पी है। वो पूछते नहीं किसी को, देखते हैं कि सब बहुत कितने सुखी है। और किसी को पूछेंगे तो कोई ना बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा।
तो वो फिर देखते हैं सब शादी करते, सब सुखी है, तो फिर शादी करते हैं। फिर शादी करने के बाद सोचते हैं कि अभी भी सुख नहीं आता है, जब बच्चे हो जाए सुख है, तो बच्चे आते हैं बाद में बोलते हैं अभी तो ऊपर से प्रॉब्लम बढ़ गया, तो अभी क्या करने का। तो फिर दूसरों को देखते हैं, ये तो बहुत सेवा के काम करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उनका सोशल स्टेटस है, उनको कितना मान मिलता है, तो फिर सोचे चलो कुछ सोशल सेवा करते हैं, तो इतना रिस्पेक्ट तो मिलेगा। तो फिर वहाँ भी जाते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है, उनको अच्छा लगता है। मगर कोई टेढ़ा आदमी भी मिल जाता है ना, सबके बीच में इंसल्ट कर देता है ना, तो सब वो सुख चला जाता है। तो सारी जिंदगी सुख के पीछे भागते हैं, और ह्यूमन बीइंग नहीं, all living being without any exception, they are seeking happiness, but they don't know what is happiness. So whatever they say, oh here happiness is there, they will learn after that. Oh here happiness is there, they will learn after that. ख्याल में? तो आपने जो बताया रे कि जब स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या लगेगा कि मेरा जो फर्स्ट रैंक आ जाए देन आई विल बी हैप्पी, और फर्स्ट रैंक आ गया तो वो हैप्पी भी होगा, मगर वो हैप्पीनेस टिकेगी कितनी। फिर सेकंड टेस्ट में वो सेकंड हो गया, और दूसरा जो सेकंड वाला फर्स्ट हो गया, तो क्या होगा, सेकंड आने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं रहेगी। समझ में? या तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, कैसे हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, लॉन्ग ड्राइव पे गए, अब कहाँ, इंडिया में कहाँ से? बिहार, बराबर, पटना। बस्तर से जहाँ पे सारा बस्तर। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप हम दोनों कहीं जाते हैं, दो फ्रेंड्स जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, और दोनों को भूख लगी है, तो रास्ते में ढूंढते हैं, तो कोई ऐसा मिल गया, तो बोलता है वो बंद कर रहा था, तो जाते नहीं अभी बंद मत करो, हमें कुछ खाना दे दो, फिर बाद में जाओ। तो बोला नहीं अभी तो बंद कर रहा हूँ, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे नहीं कुछ तो दे दो, तो बोलेगा अभी तो दूसरा तो कुछ नहीं मिलेगा, पर चिकन मिलेगा। ख्याल में? अभी वो दो फ्रेंड है, एक नॉन वेजिटेरियन है, उनको चिकन देंगे तो कितना खुश हो जाएगा, मगर जो वेजिटेरियन है उनको कितनी भी भूख लगी है फिर भी वो टेस्ट भी करेगा, मगर जो नॉन वेजिटेरियन है उनको मुंह पे पानी आएगा, he will be very happy। तो जो चिकन सुख देता है, जो वस्तु सुख देती है, जो मटेरियल सुख देता है, तो दोनों को सुख आना चाहिए, तो दोनों को सुख आता है नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि ऑल दिस रिलेटिव हैप्पीनेस, ये सब भौतिक सुख है ना, दे आर डिराइव्ड हैप्पीनेस, दे आर डिराइव्ड हैप्पीनेस, नॉट रियल एग्जिस्टिंग हैप्पीनेस, मीन्स दे आर बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस। आपकी बिलीफ है तो आपको सुख लगेगा, आपकी बिलीफ नहीं सुख नहीं लगेगा। मैंने बताया आपका ये ड्रेस है तो आपको ऐसा ये कलर आपको पसंद है, उनको ये कलर पसंद ही नहीं है, तो उनको वो ये ड्रेस आपका कितना महंगा है फिर भी देंगे, शी विल नॉट बी हैप्पी बिकॉज हर बिलीफ इज नॉट देयर। हर किसी की खुशी के मापदंड अलग-अलग। हाँ, सबके अलग, सबके अलग। ये आपके हस्बैंड है, आपको वो एनिवर्सरी में वो डायमंड का नेकलेस लाके दे देंगे, तो आपको कितनी खुशी होगी नहीं होगी? हाँ, बहुत के लिए खुशी होती है। हाँ, उस पल के लिए खुशी होती है। हाँ, वो यही बोल रहे कि खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। क्या कितना अच्छा बताया, बहुत खुशी होगी। तो हस्बैंड को भी मन में विचार कि कुछ देना चाहिए, ऐसा ऐसा बोलना ही चाहिए, हाँ बहुत खुशी होगी। She has some question. हाँ, ये आवाज ही नहीं सुनाई देती। प्रीवियसली बोला कि जो ह्यूमन होता है उसको हाँ, कि जो गॉड होता है उसका हम जो बोलते हैं कि गॉड ने हमको दिया, तो हम लोग खुश होते हैं तो बोलते हैं कि भगवान ने किया, हमने किया, और जब दुख होते हैं तो बोलते हैं कि भगवान के उसने। बट अगर हम ही नहीं होंगे
तो भगवान ऑपरेट कैसे करेगा? हाँ बराबर है, हम है तो भगवान है ना, तो सही बात है, करेक्ट करेक्ट कि हम है तो भगवान है ना, हम नहीं है तो भगवान करेंगे क्या? इससे भगवान समझ गए कि मैं करने के लिए जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो भगवान डूअरशिप के, गॉड इज बियॉन्ड डूअरशिप, मैं डूअरशिप कि मैं कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बुरा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, जो डूअरशिप है ना, भगवान डूअरशिप के ऊपर है। तो जहाँ डूअरशिप होती है वहां करने का होता है, कर्तापना होता है, और वहां जहाँ भगवान है वहां सिर्फ देखने का होता है। तो देखने में आनंद आता है कि करने में आनंद आता है? When you feel happy, when you're watching something or when you're doing something. When you are doing something you will get tired. She is saying when we achieve something. हाँ बराबर, when we achieve our goal we will feel It happy. depends on the situation. हाँ ना बराबर है कि when we achieve our goal we will feel happy. मगर एक समझने के लिए कि जहाँ कुछ भी करने का है ना वहाँ मेहनत है, और मेहनत में थकान लगती है, और जहाँ कुछ भी करने का नहीं है, आप घर में बैठे हैं, आपको भूख लगी है, तो उनको बोलते हैं, बेड को बोलते हैं या तो मम्मी को बोलते हैं, ला के दे देते, कुछ करने का नहीं, कितना आनंद आता है, अच्छा लगता है। अरे पहले तो वो गूगल खोलना पड़ेगा कि पिज्जा कैसे बनाने का, तो बना लेनी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भगवान है, पर भगवान हम जो मानते हैं ने वो हमारी बिलीफ का भगवान नहीं है। इसलिए आपको एक बात करूं कि हम भगवान की भक्ति तो करते ही नहीं करते। क्या आपका नाम क्या है? फर्स्ट नेम? नीरज। नीरज भगवान की भक्ति करते ही नहीं करते? अच्छा, कौन सा भगवान की करते हैं? मैं लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का। क्या? लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती, ना बहुत अच्छी बात है। तो लक्ष्मी जी की तो भक्ति करनी ही पड़ेगी ना, उनके बिना तो चलेगा नहीं, और सरस्वती की भी करना बहुत अच्छा है। तो ये वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है कि हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हार्टीली सिंसियरली भक्ति करते हैं, मगर भगवान को पहचाना है। वो एक होता है ना कि अपने जीवन से याद किया, अगर कहीं फंस गए हो, और मेरे साथ होता है, मैं कहीं फंस गया हूँ, नहीं हो रहा है, अगर मैं एक बार रिकॉल करता हूँ तो काम हो भी जाता है, और हमेशा होता है। वो डिफरेंट बात है, वो डिफरेंट। तो ये एक है ना, सोच का होता है कि आप किस तरह सोच रहे हो। 39%। मैं क्या बता रहा था कि आप जो भी भगवान की भक्ति करें, आप डिफिकल्ट संजोग में आ गए और भगवान को याद करते काम हो जाते, वो अलग बात है। मैं पूछना कितना चाहता हूँ कि आप भगवान की भक्ति करते भगवान को पहचानते हैं, ऐसा पूछ रहा हूँ। ये आपके बाजू में बैठा है, आपका फ्रेंड है ना, यू नो हिम वेरी वेल, कितनी उम्र का है, कौन सा गांव का है, क्या है सब पता है कि नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड को पहचानते हैं और भगवान को तो पहचानते ही नहीं। भगवान के बारे में कितना हो गया, बुरा मत मानना, एक समझने के लिए बता रहा हूँ कि आप छोटे थे तो माँ बाप लेके जाते हैं कि ये भगवान है, जाके दर्शन करो, तो मत्था टेक के आते हैं। तभी उनको पता है कि भगवान क्या है। उनको इतना पता है कि घर में हम यहाँ जाके ऐसा मत्था टेकते, हाथ जोड़ते हैं तो घर के सब खुश हो जाते हैं, बराबर। तो उनके लिए भगवान क्या है? सबको खुश करने की जगह। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो उनको पता चलेगा कि ये हाथ में धनुष्य है तो भगवान राम है, ये हाथ में सुदर्शन चक्र है तो कृष्ण भगवान है, इतना पता चलेगा। और बड़ा होगा तो क्या होगा? उनको स्टोरी पता होगी भागवत की, रामायण की, तो भगवान के बारे में वो स्टोरी पता होगा। तो 20 साल तक ये सब पता चल गया,
फिर 20 के बाद वो 40, 50, 60, 70 होगा, उससे आगे बढ़ेगा। तो एक समझने के लिए बता रहा हूँ कि अभी हम जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो माने हुए भगवान की भक्ति करते हैं, पहचाने हुए भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और भगवान ने क्या बताया, आप मुझे माने हुए भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको पुण्य बनेगा, और आप मुझे पहचान कर भक्ति करेंगे तो आपके भीतर के राम प्रकट हो जाएंगे, आप खुद भगवान हो जाएंगे। समझ में ऐसी बात है, बाहर मत बोलना, बस समझने के लिए। तो आज तक हम कैसी भक्ति करते हैं, माने हुए भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पहचान कर भक्ति नहीं की है। और जो भगवान को पहचान कर एक ही बार भक्ति करें तो काम हो जाए, तो भगवान को पहचानना पड़ेगा नहीं। नीरज आप तो हाँ बोल देते, आप गलती से यहाँ आ गए, फंस जाएंगे। हाँ, फंसना है कि नहीं फंसना? कहीं तो फंसना पड़ेगा। हाँ कहीं, वो तो शादी हो गई ना, नहीं अभी नहीं। और रिश्ते नहीं फंसे अभी तक, इसलिए बोलते कहीं तो फंसना पड़ेगा नहीं। हाँ, और यू वांट टू आस्क आस्क Why people, some people get angry so much? हाँ, why people Get angry so much. get angry so much? Oh, so there are so many things we get angry. I am telling you simple thing, then I will tell you about other state. You say your mind frame is there. Okay, you have to do this thing like that, this thing like that. So as per your design, if somebody will not do it, then you will get angry. When your ego is hurt, you will get angry. When somebody will cheat you, so loss of money, you will get angry. So in simple way, there are so many weaknesses within us. Weaknesses within us, like anger, pride, attachment, avarice, egoism, competition, jealousy. So when the weakness within is not nurtured, you will get angry. Simple thing. Say somebody will not satisfy your ego, you will get angry. And when you can conquer your ego, if you want to conquer your ego, you want to conquer your ego? Are you sure? But I have one solution. But when doctor will do some surgery, doctor will tell everything. Yeah, before this surgery, this will happen, and after this surgery, this thing is possible. Same way, it's a big surgery, and after that surgery, your ego is your anger will go completely. But you want to do that thing? There is no fees, don't worry. You will not have to pay anything. But you want to conquer your anger completely 100%, or you want to keep some 10%, 5%? Or say your friend is there and say doing something wrong with you, then if you will get angry, then you can protect yourself. So you need some anger with you, about 20, 30%. Or you want to conquer whole 100%. 100%. सारी समझन सारी जन समझ अच्छी है. So as far as आप सबके लिए बता रहा हूँ, ignorance is there, anger will be there. So root cause of the anger, all these subordinate causes, but root cause of the anger is ignorance. Which ignorance? That I am not knowing this scripture, or I am not knowing this thing, that that is the ignorance. Self-ignorance. Self-ignorance. As far as self-ignorance is there, anger is there.
But if you want to conquer your anger, I can give you now. You want? But you will have to do it. So next time when I will come, I will check it. Sure? But if you will conquer your anger, then you will have big problem. So your husband will shout you and you will not shout back. So everybody will take undue advantage of you. You think before. Still you want to conquer? That's all right. So to conquer anger, I am giving you 3 steps, which my master, Dada Bhagwan, you know that photo picture? This picture. This picture is known as Dada Bhagwan. Actually, his name was A.M. Patel. But in 1958, when he was sitting on the Surat railway station in India, there is one state, Gujarat, and the one city, big city, Surat. So on his railway station, platform number 3, he was seated, and it was evening time. At that time, without any efforts, but naturally, all the coverings were unveiled, and the pure soul within, the God within, was fully unveiled. So we know him as Dada Bhagwan. Dada Bhagwan means God within you, God within all living being. Simple thing. So there are 3 steps. So I am giving you first step. First, all the time, keep in your mind that at any place, at any time, with any person, anger, after all, it is my weakness. Clear? You understand this thing? Simple. I am giving you a very simple thing. Anger, after all, it is my weakness. This one step. Just you have to keep in your mind. Then second step. When you lose temper, the other person, even though he is wrong, the person will get hurt. Is it? Say you lose your temper on your children, on your kids. So what they will think? Children will think, oh, okay, I made mistake, but mom should not get angry. He can tell me in good way, gently. So when you lose your temper, when you get angry, the other person get hurt. And when any person will get hurt, he will have that revenge. Bhavana is revenge bhavana. That feeling of revenge will be there. So no, when I will get chance, I will see him. So for that, you have to ask the apology from the God within that person. You understand? Say you got angry on Rosemary. Yeah. You got angry on Rosemary. Then what will happen? The God within her is also there. So you will have to ask for apology. Okay, oh God, residing within Rosemary, oh God, who is completely separate from mind, speech and body, and all type of karmas residing in Rosemary, for my mistake, because I lose my temper, for my mistake I am asking for forgiveness. Please forgive me and give me the strength so that again in future I never get angry. This simple way you ask for apology. You understand this thing? So if you don't remember, ask her. The second, 2 step. Simple. Now third step I am giving you.
So anytime you anger, you have to use all these 3 steps. Okay, 1, anger, after all it is my weakness. Second, ask for apology. And third, never justify your anger. You understand? When you lose temper, when you get angry, afterwards you will justify your anger. Say you are dealing with your kids and they are creating problem for you, disturbing you, and you will lose your temper. And your husband is there, so your husband will tell you, oh, why you are getting angry? They are small kids. So what you will say? Oh, whole day you are outside. You stay with the kids for a whole day, you will get more angry than me. What is that? You are justifying your anger. So when you justify your anger, it will multiply within. So third step, never justify your anger. Simple. So I gave you 3 steps. Number 1, you remember? Speak. Step number 1. Number one, you say that I should. Being angry is my own weakness. Yes, being angry is my own weakness. Correct. Then second, yes, ask for apology. Perfect. You can ask in person also, or you can ask in mind also. And third, don't justify your anger. These 3 steps. That is, So- after you get angry, you start thinking, okay, see, I got angry, that means I'm good. Good, I got angry on them. Don't justify it that yes, it's a mistake, it's my own weakness. You don't need to get angry. So when you apply these 3 steps every time, say you lose your temper 20 times in a day, and you apply all these 3 steps every time, then what will happen? Within 6 months, you will conquer your 80% anger. Correct? Then remaining 20%, you will have to keep little bit patience. It will take totally 3 years. But you can remove it. If you decide, it's possible. Total eradication is possible. But 80% will go within 6 months. Even if you get angry, say 25 times in a day, and 25 times you do these 3 things. So after all, it is my weakness, you ask for apology and don't justify your anger. 25 times you do this thing, then within 6 months, 80% of your anger will go. And then say your anger once in a week or like that, then also you apply these 3 steps. So that remaining 20%, it will be completely eradicated within 3 years. And then in any situation, anybody instigate you, still you will not have anger. And another thing, just I am telling you, when you conquer your anger, then what will happen? You will not protect yourself. Before, by getting angry, you are trying to protect yourself. Now you are not protecting yourself. Then it becomes the responsibility of the Mother Nature to protect you. So then what will happen? When you are protecting yourself is better, or Mother Nature is protecting you is better? Of course, Mother Nature. So don't worry, okay, if I will not have any anger, then other people will take undue advantage of mine. It's not possible. Don't worry. So you try these 3 things and you see, you observe how much anger you conquer, and you feel, oh, it's okay. You continue and you will conquer 100%. This is not religious thing, this is scientific thing. Scientific thing.
So you can do this. चलो पूछते जाओ. Okay, one more question. Oh, how many questions? I am here just for 2 hours. Okay, go on asking. Like, if our parents do something for people and they lay curse on our parents, and the curse is following us, how can we do to out of that? શું કહે ઇંગ્લિશ માં બોલો મને આપણ Speak again. Let me understand. or somebody you repeat because of this Like fact. our parents do something to, like my parents do something to this boy, and this boy lays curse in my parents. How can we, and because it's following us, how can we do to out of it? Okay, so what she's asking is, the parents did something to somebody. Good, good, good. No, bad. No, good. Bad. Bad. Okay. Means what she is believing that, suppose I will take my example. I am doing bad to somebody. Okay, now that when somebody, that person also will get time, and by the time my children are there, so they now want to take it out on my children. Revenge. Revenge on my family. You know, just what she is trying to explain, how to come out of that. Oh. As a how to not feel that revenge. अच्छी बात. Simple thing. You understand God is in all living being. God, we say God is up. Okay. But the real address of God, God is in all living being, whether visible or invisible. Simple thing. Now say somebody has that revenge feeling for you or for somebody else. So at that time, you can pray the God within that person. Say that you have this feeling of revenge, and whatever my mistake is there, for that I am asking forgiveness. This simple thing you do, and the God within will give that, make the person positive. Because it will be a direct dialing from God within you to the God within that person. And direct dialing. No intermediate, no person is there. Direct dialing. So it will be effective immediately. So just ask for forgiveness. Okay, whatever mistake I did in the past, I don't know. But from your action, because at present you have that revenge feeling for me, or for my brother, my sister, my kids, for that, whatever my mistake is there, for that I am asking forgiveness. That way you can ask for forgiveness in your mind, okay, and it will help you. It may not come back immediately. It will take gradual time. As you said the yoga, it takes time to come. But you keep asking. You do it for 3, 4, 5 times, and within 1 week, you will feel that there is some changes there. So this simple thing. Understand? God is in all living being, that you understand? Because you believe, because in Christianity, in Muslim, they believe that God is up. But in reality, God is God, and God is in all living being. This material, God is not there. Where God is there, the feeling is there. You see, God is within this person. So if I pinch, then he will have feeling. And even vegetables, God is there, but they are in dormant stage, so they can't express their feelings. But God is there. So in all living being, even in bacteria, virus, God is there. Even in bad person like terrorist, God is there. You understand? So God is in all living being. So what you have to do, you have to ask forgiveness from the God within that person.
say somebody is creating problem for you. You can ask forgiveness from the God within that person, You have to ask. and it will be clear. You have to ask in person. In person, or in mind. in person, if possible, in person. If the person is royal, and if you will ask forgiveness, then he will become more humble. But some other person, then he will become more tight. So it will be a problem for him also. So best thing, you ask in mind. There is a book, Dada Bhagwan's teaching book is there, Avoid Clashes. Is there. Oh. You can show them. Uh-huh. And they can read. Oh, when they good, good, read. good. Yes, Avoid Clashes. Yes, this one. You said this is one book, Avoid Clashes. This will be very useful for you. Very, very. You can read it. And if you don't understand anything, ask mom. Avoid classes. You have classes, you must be passing through classes during the day. You have problem with somebody. Problem with madam? No. But Bhavana madam? No? Oh, good. So you are good or madam is good? Both. Both are good. But you have problem outside with your friends, with your colleagues, with your relatives, with your brothers, with your sisters. So everywhere we have some problem. So She has problem. just this book, huh? Yeah, she has problem with me because I'm not paying her well. No, not like that. Not like that. So you read this book, it's very important. Avoid classes. Take. Anybody who likes to read, Is here. in Come Hindi, home. in Hindi, other book is there. All the teachings are there. The book, other book. Sopa Prakasha. There is one more book. Yeah. Those who Neeraj, you read, can take this book. You can read it. You can read it. When you go, you take it. चला आगे. क्या हुआ? हाँ वो फिर चेंज हो गया ना. हाँ. वो तो बिलीव के लिए बताया था कि आपको डायमंड का नेकलेस आपके एनिवर्सरी आपके हस्बैंड ला के देंगे, आपको कितना आनंद होगा नहीं होगा? कितना दिन चलेगा? हाँ, एक साल तक तो चलेगा ना. हाँ. तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको कितना आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा. और फिर बाद में इंडिया में शादी है तो शादी में भी पहनेंगे ना. हाँ? और शादी में पहनेंगे, नॉट ओनली विल वेयर इट, आप शादी में पहनेंगे और कोई आपको पूछेगा नहीं कि डायमंड का है क्या है, तो ऊपर सामने से नहीं बताएंगे. बताएंगे नहीं? अरे बताएंगे, अरे भाई मेरे हस्बैंड ने मेरी एनिवर्सरी थी ना अभी, तो मुझे देख गिफ्ट दिया है और रियल डायमंड का है और इतने लाख का है, सब बताएंगे. तो अंदर आनंद ज्यादा होता है. कोई पूछता नहीं तो सामने से बताना पड़ता है. नहीं बताना पड़ता है नीरज? बताना पड़ता है. अभी मैं आपको आके बात बताऊं कि आप वो डायमंड का नेकलेस पहन के वो शादी में घूमेंगे, आपको कितना आनंद होगा. बराबर है. मगर बाय चांस आपको ऐसा कहीं बाहर जाना है और बाहर जाएंगे तो डायमंड का नेकलेस पहन के तो नहीं जा सकते, तो आप आपके हस्बैंड के गले में डाल देंगे, पहना देंगे उनको, तो उनको कितना आनंद होगा? बिल्कुल भी नहीं. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि डायमंड का नेकलेस जो आनंद देता है ना, तो आपको भी देगा, हस्बैंड को भी देगा. तो ये क्या है? बिलीफ. आपकी बिलीफ में है तो आपको आनंद होता है, आपके बिलीफ में नहीं है तो आनंद नहीं होता है. तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, तो जहां जहां हमें अनहैप्पीनेस है ना, जस्ट चेंज योर बिलीफ एंड यू विल बी हैप्पी. नहीं समझ में? मानो कि आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, इंडिया गए, अभी घर में है और उम्र हो गई है, तो चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते?
उनको रात को भी कुछ चाहिए तो बोलेंगे, आपको नीरज 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 करेंगे ना, आप एक बार बोलेंगे नहीं, 2-3 बार बोलेंगे, तो फिर आपको भी हुआ है क्या बार बार बोलते हैं, तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। मगर क्या करने का, बिलीफ बदलने का। आपके बिलीफ में क्या है कि मैं बार बार क्यों पूछते हैं, मैं एक बार बार क्यों चिल्लाते, एक ही बार बोलते हैं तो मैं कल करता हूँ, मैं कहाँ ना बोलता हूँ, मैं सेवा तो करता हूँ। और थोड़ा ऐसा सबूत रखे तो अच्छा है ना, ऐसा होगा ना, पेशेंस रखे तो अच्छा है। मगर कैसे वो बिलीफ बदलनी पड़ती है। नहीं ये एजेड हो गए ना, तो नई गाड़ी गर्म होती है कि पुरानी गाड़ी गर्म होती है? बराबर। पहले के जमाने वो फियाट एम्बेसडर थी ना, पुरानी हो जाए ना तो वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाती थी। तो समर में बाहर जाना है ना तो वो मीटर देखना पड़ता था कि 90 के ऊपर गया तो थोड़ा रुको, और पानी भी डालते थे रेडिएटर पे। ये जो बच्चा ये अभी नया आया है, 3-4 महीने हाँ, आप पूछते रहे ना, आप पूछो। तो क्या मैं समझ में, ये पुरानी गाड़ी है वो गर्म हो जाती है ना, पुरानी गाड़ी गर्म हो जाए तो घर में ऐसे ग्रैंड फादर है कि ग्रैंड पेरेंट्स है तो पुरानी गाड़ी हो गई नहीं, तो उनका फिर कैसा रहेगा, पेशेंस नहीं रहेगी, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाएंगे। तो पुरानी गाड़ी गर्म नहीं होती है तो सरप्राइज होना चाहिए, हमारी तो नई गाड़ी है, क्या तो ऐसा बिलीफ बदलते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ना तो वो लोग प्रॉब्लम करना बंद कर देंगे। मगर आपको डीलिंग में आपको प्रॉब्लम हुआ, आप इमोशनल हो गए, आप सेंसिटिव हो गए, आपने टेम्पर लूज किया, तो फिर सामने रिएक्शन भी आएगा। और ये सब बिलीफ चेंज कर दिया, आप भीतर से शांत हो गए तो वो भी शांत हो जाएंगे। पूछो आप भी क्या, एनीथिंग यू वांट टू आस्क टू फील फ्री, एकदम आराम से, ये पूछने की जगह है, आपको भी पूछना है तो। ये केरला से कर्नाटक से है, राजस्थान से है, और ये अपना बिहार से, तीनों जगह से बैठे हैं। हाँ वो महाराष्ट्र से है, गुजरात से भी गुजरात तीन। से, एक गुजरात से, पंजाब। अच्छा है। पूरा हिंदुस्तान। कनाडा में आका पूरा इंडिया, यहाँ इंडिया, यहाँ नाइजीरिया में पूरा इंडिया मिल जाता है। पूरा इंडिया। अच्छा है। बहुत प्यारे बच्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो बच्चा कंफ्यूज था कि मतलब आने के बाद, अभी शुरुआत में तो नाइजीरिया में जो भी आता थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो मैंने उसको बोला कंफ्यूज नहीं होना, अभी थोड़ा टाइम निकलेगा तो अच्छा लगने लग जाएगा। हाँ, यूज्ड टू हो जाएगा, फिर वापस जाने का मन भी नहीं होगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, हाँ। नहीं करेगा। तो उनको तो अनुभव है ना, फादर का अनुभव है। 20 साल तो हो गया। 2 साल के लिए आया था। 20 साल हो गए हैं, क्या बात। नहीं वो तो ठीक है, मगर आपके फादर है वो भी ना बोलते इंडिया नहीं जाना, यह अच्छा है। ये मैंने 2005 में भरत भाई से किया, तो उस टाइम पे मेरी यही हालत थी जो आज इसकी है। तो आप ये सोच के देखो कि अगर आप प्रयत्न करते हो तो परिवर्तन आता है। ये बच्चा बता सकता है, मुझे गुस्सा आता है क्या? तो अगर आप प्रयत्न करोगे तो आप अपना कॉन्कर कर सकते हो। याद रखना है कि burn anger before it burns you। डिफिकल्ट तब है जब आपकी ईगो है, वो ईगो है तो डिफिकल्ट है, कोई भी चीज डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग में होगा जैसे difficult, फिर एज अ rhythm हो टीचर जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, नहीं वो स्टेप फॉलो करने बहुत प्रैक्टिस के बाद आएंगे। नहीं वो मैं आपको बार-बार सिंपल, याद नहीं नहीं करना नहीं, आपको सिंपल बता दूं, प्रयत्न करने का है तो डिफिकल्ट है। तो नीलू जी पता है, आप प्रयत्न करो तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत अलग बात है। प्रयत्न करने का है वहाँ डिफिकल्ट है, कठिन है। यहाँ तो क्या है, प्रयत्न भी नहीं करने का है, सिर्फ भीतर से वो दृष्टि बदल जाती है, समझ बदल जाती है पूरी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ख्याल में? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि गुस्सा तो एकदम the fraction of seconds में आ जाता है। वो सोचना और वो चीज को कैलकुलेट करना, उसमें तो मैंने तो क्या बताया, गुस्सा आने के बाद एक बार आपको गुस्सा आ गया, बाद में रखने का कि वो मुझे गुस्सा आ गया है, आफ्टर इट इज माय वीकनेस,
जिसके बाद गुस्सा उनकी माफी बाद में मांग लो। बच्चों से माफी मांगते रहेंगे। हाँ हाँ, मन में अपने माइंड में मांगनी है ना, बच्चों से थोड़ी मांगनी है, अपने माइंड में हम मांगनी तो है। इनको पूरे दिन ही डांटते चार्जिंग रहते करा हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली डांट खाते हैं। 5 मिनट तक वो 3 स्टेप फॉलो करो बस, हर बार वो 3 एक्चुअली स्टेप फॉलो ये भी एक स्टेप है, आप अवेयर हो रहे हो कि आप डांट रहे हो। हाँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप गुस्सा मत करो, ऐसा बोला मैंने तो क्या बताया कि जब भी क्रोध आ जाए बाद में ये 3 स्टेप रखने का कि आफ्टर ऑल इट इज माय वीकनेस, जिनसे कह जा तो उनके भीतर जो भगवान है उनके मन में माफी मांग लो। आप सोचेंगे छोटी बच्चे मैं कैसे माफी मांगू? नहीं, माफी मांगे जैसे अगर श्लोक- ज्यादा गुस्सा हो गया तो we will say that ये आजकल की जनरेशन टोटली चेंज हो गई है, तो एज अ ना बराबर है, तो मैं क्या मन में माफी मांग लेना। और तीसरा क्या बताया कि जस्टिफाई मत करना, वो तो गुस्सा आने की बात है ना। मैं पहले रुक लो, मैं ऐसा बोलता है ना कि आप उनको कंट्रोल करो। मैं कंट्रोल करने का भी नहीं बोलता हूँ, कंट्रोल करने का प्रयत्न करो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो क्या बोला, आने दो उनको, आने दो, मगर एवरी टाइम यू अप्लाई दिस 3 स्टेप्स। देखिए पहले लाइफ में ये लास्ट का स्टेप पहले लाना है, फिर धीरे धीरे सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे, फिर वो फर्स्ट स्टेप आएगा। नहीं, वो तीनों स्टेप साथ में अप्लाई करने के। क्योंकि हाँ, एक बार गुस्सा कर देंगे तो फिर उसके बाद सॉरी बोल नहीं, गुस्सा होने दो ना, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, भले गुस्सा आ गया, मैं वहां रेड सिग्नल नहीं देता हूं। मैं भी जानता हूं कि यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर एंगर, तो मैं कंट्रोल करने का तो बोलता ही नहीं हूं। मैं तो क्या बोलूंगा, आपको गुस्सा आ गया बाद में रखो कि आफ्टर ऑल इट इज माय वीकनेस, ये मेरी कमजोरी है। हाँ, पूरा चेंज हो जाएगा अंदर। आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे मैंने बताया 6 महीने में जाएगा 80%। और दूसरा है कि इफ यू वांट टू कॉन्कर इट 100% इमीडिएटली, देन आल्सो देयर इज वन अदर वे इज देयर। वो दूसरा रास्ता है, बस उनको तो करने का देना पड़ता है। नाइचन लेडी स्ट्रांग है ना, उनको करने का देने का, और हमारी इतनी करने की ताकत नहीं है, तो उनको सीधा देने। बराबर है, सख्ती वाले। आपने मिस कर दिया। अच्छा, आपने सुन लिया। हाँ, तो नीरज नाम है ना आपका? यस सर। नीरज, तेरा क्या, आपका क्या नाम है? सौरभ। और आप? देव प्रकाश। हाँ, नाम तो अच्छा है, देव प्रकाश। देव को प्रकाश देते हैं। प्रसाद। ओ प्रसाद। तो नीरज, नीरज नाम इजी है, तो नीरज से बात करता हूँ, चलेगा ना? चलेगा ना? आपका क्या नाम है? पिंटू पटेल। पिंटू पटेल। गुजरात में कहाँ से? बिलीमोरा। बिलीमोरा प्रॉपर? हाँ, मैं भी गुजराती हूँ। तो एक समझने के लिए कि नीरज आपका नाम है, बराबर है? आप भी समझ लेना। आपको हिंदी समझ में आती है? नीरज आपका नाम है, तो मैं नाम बोल सकता हूँ, मुझे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप कार्ड निकाल के बताइए, देखो ये मेरा फोटो है, मेरा नाम है। तो नीरज आपका नाम है, तो ठीक है, आपका नाम है, पर वो आपका नाम है, आप खुद है। इट्स अ नेम गिवन टू यू जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। व्यवहार चलाने के लिए नाम दिया गया है, और आपने मान लिया कि मैं नीरज हूं। आपका जन्म हुआ तो 2-4-5 दिन कोई नीरज बोलेगा ना, तो आप उनके सामने आँख खोल के देखेंगे भी नहीं। वैसा 2-3 महीना हुआ, बाद में नीरज करते रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि मुझे पुकारते हैं, तो जहाँ से बोलते हैं नीरज, तो वहाँ ऐसा देखेंगे। तो एक क्या हुआ, आपके भीतर एक मान्यता खड़ी होती जाती है कि मैं नीरज हूँ, मैं नीरज हूँ, मैं नीरज हूँ। तो सही में आप खुद नीरज नहीं है, आपको दिया हुआ नाम है जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, व्यवहार चलाने के लिए। पर व्यवहार चलाने के लिए जो नाम दिया गया उसने आपको सही मान लिया, तो क्या हो गया कि आप सही में जो है वो आप जानते नहीं है, और जो आप नहीं है वो आपने मान लिया।
ख्याल में? आप जो नहीं है वो मान लिया, तो क्या हुआ कि आप अपनी अपनी सही कुर्सी पे नहीं बैठे, दूसरे की कुर्सी पे बैठ गए। और दादा भगवान ने सिंपल भाषा में बताया कि आप नीरज नहीं है, मगर आपकी मान्यता में भी इतना स्टॉन्चली पक्का बैठ गया है कि मैं नीरज हूं। तो वो कैसे मान्यता है? और कैसे मान्यता है? अज्ञान मान्यता, रॉन्ग बिलीफ। इट्स ए फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ। देव प्रसाद समझ में? फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ। अभी ये रॉन्ग बिलीफ है तो दूसरी बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ खड़ी हो जाएगी कि मैं इतनी उम्र का हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये गांव का हूँ, मैं ये स्टेट का हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, इसका भाई हूँ, इसका चाचा हूँ, इसका मामा हूँ, इसका फ्रेंड हूँ, और शादी हो गई तो इसका हस्बैंड हूँ। बराबर खड़ी हो जाती है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो ये सारी दूसरी रॉन्ग बिलीफ कब चिपकती है, खड़ी होती है? कि ये फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ है तभी कि मैं नीरज हूं, मैं देव प्रसाद, ऐसी फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ है तो दूसरी रॉन्ग बिलीफ चिपकती है। तो आपको करने का कितना है कि ये फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होनी चाहिए, और आप सही में कौन है उनकी पहचान हो गई तो आपका पूरा काम हो गया। सिंपल थिंग है। अभी आप सही में जो है वो जानते नहीं है, मैं ये रॉन्ग बिलीफ के आधार से जी रहे हैं, मैं नीरज हूं ऐसा मानकर ही जीवन जी रहे हैं। अभी ये बिलीफ फ्रैक्चर हो गई और आप जो सही में है वो सेट हो गया, तो बाहर का जीवन तो वैसा ही रहेगा, मगर एट प्रेजेंट आउटर सिचुएशन, आउटर सर्कमस्टेंसेस आर अफेक्टिंग यू। बाहर के जो संयोग है आपको डिस्टर्ब करते हैं ना। बाहर से सुख के संयोग आ गए, अनुकूल संयोग आ गए, यू विल बी वेरी हैप्पी, और बाहर प्रतिकूल संयोग आ गए, दुख के संयोग आ गए तो आप दुखी हो जाते हैं। तो बाहर के संयोगों की आपको इफेक्ट होती है, और व्हेन यू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ, तो क्या होगा कि संसार में रहेंगे, सारी संसार की जिम्मेवारियां निभाएंगे, मगर कोई भी संयोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। यू विल बिकम स्टेडी फ्रॉम विदिन। और इतना ही होना चाहिए। धर्म हम क्यों करते हैं कि अपना लाइफ स्पान है ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव संयोग तो आते रहते हैं ना, अप्स एंड डाउन नहीं आते? सबको आते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन सबको आएंगे। मगर कितने भी अप्स भी आए, कितने भी डाउन भी आए, मगर वो स्टेडी रह पाए, वो सबसे बड़ा काम है। वो करना पड़ेगा ना। तो ख्याल में रखना कि ऐसा होना चाहिए। तो चलो एक प्रार्थना बुला लेते, फिर पूरा टाइम हुआ ना, पूरा करना पड़ेगा। तो आप चारों के लिए सब नए हैं ना? आप भी, आप तो पहले आए थे ना? हाँ, तो आप तो नए नहीं है, तो आपके लिए नहीं भैया, चार जो नए हैं उनके लिए। तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये क्या है, ऑफिशियली पूरा करते हैं, बात तो कुछ पूछना है तो पूछते रहना, और टाइम से पूरा करना पड़ेगा। लेट शुरू किया, एक गलती किया, अभी लेट पूरा करेंगे दो गलती हो जाए, दो नहीं, कम गलती करेंगे, एक गलती करनी। तो आपको सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए मैं आपको एक प्रार्थना बता देता हूँ। वो रात का और सुबह का ऐसा है अलग अलग, और कुछ आपको चाहिए तो अनमोल दे देगा, आपको व्हाट्सअप भी कर देगा। तो मैं बुलाता हूँ अभी। तो सुबह में उठ के आप जो भी भगवान को मानते हैं ना, उनके पास 5 बार शक्ति मांग लेना। मैं बुलाता हूँ एक बार। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। सिंपल है, समझो।
પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંचित मात्र પણ दुख न हो न हो न हो। ये शक्ति आपको जो भी भगवान को मानते हैं सुबह में उठते ही 5 बार मांग लेने की। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये शक्ति मांगने के बाद भीतर निश्चय करने का कि सारे दिन में मुझे किसी को दुख देना नहीं है। इतना कर लेना, हो पाएगा ना? इतना तो आपसे होगा ना? ये तो पता है ना आपको, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर आपने सुबह 5 बार शक्ति मांगा, निश्चय किया, फिर भी रात को सो जाएंगे, इन बिटवीन किसी को दुख तो हो जाएगा ना। शक्ति मांगने के बावजूद भी दुख हो जाएगा, तो जाने अनजाने में किसी को दुख हो गया तो क्या करने का? रात को उनके भीतर जो भगवान है उनकी माफी मांग के सो जाने का। वो कैसे सो जाएगा वो प्रार्थना बुला लेता हूँ, फिर पूरा करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है। आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता की वजह से मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से वैसे दोष कभी भी न करूं। और वैसे दोष कभी भी न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए, जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो कह रहा है रात को सोने से पहले ये प्रार्थना बोल लेने का। और उसने जो बताया कि अज्ञानता की वजह से मैंने जो जो दोष किए हैं, तो दिन में जो 2, 4, 5 गलती हो गई ना, वो याद करके उनके भीतर के भगवान की माफी मांग लेने की। अभी इतना करना, इतना करेंगे तो क्या होगा कि कुदरत समझ जाएगी कि नीरज का इंटेंशन क्या है, उनकी भावना क्या है कि मुझे मन वचन का से किसी को दुख देना नहीं है। तो एज ए रिएक्शन जो उनके है ना, न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ न्यूटन, हाँ, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका सारा दिन में एक्शन क्या है कि मेरे मन वचन का किसी को दुख न हो। तो एज ए रिएक्शन मदर नेचर वो कैसा संजोग क्या करेगी, तो कि आपको ऐसा संजोग देगी कि कोई आपको दुख नहीं देगा, क्योंकि रिएक्शन इज इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये साइंटिफिक है, पर अपना धर्म का बहुत सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल है, वो आपको दिया। तो इतना करना अभी, और फिर कभी ध्यान में रखना, सत्संग में आते रहना, और ध्यान में रखना कि मैं खुद कौन हूँ, उनकी पहचान करना। वो कभी हो सकती है कि असली पहचान बंद कभी हो सकती है।